Welcome to my channel Priyanka's Learn It Well, and today I would be covering the topic singly linked list. If you are new to my channel, do not forget to subscribe, and if you are liking my channel, do not forget to like and share. Let's start with today's episode. What is a singly linked list? A singly linked list is a linear data structure, each node of which has one or more data item fields but only a single link field. यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिंगली लिंक लिस्ट जो है जिसमें कि वन और मोर डेटा आइटम फील्ड्स है, जहाँ पे हमने देखा कि देर आर टू पार्ट्स टू दिस. सो वन इज़ द डेटा पार्ट एंड द अदर इज़ योर लिंक पार्ट. तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही डेटा हो. फॉर सिंगली लिंक लिस्ट देर इज़ जस्ट मैंडेट ऑन द लिंक कि हमारा सिर्फ एक ही लिंक पार्ट होना चाहिए, बट वी कैन सर्टनली हैव मोर देन वन डेटा पार्ट एज वेल. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो फाइन in the form in the case of singly linked list. So let's understand this diagram. You can see here that there are four nodes. So I'll say that in this diagrammatic representation I have four nodes. अब nodes क्या होते हैं? Nodes हमने बात करी थी कि collection है डेटा का और एक एड्रेस का. सो जो पहला पार्ट है दैट शोज योर डेटा एंड द अदर शोज योर एड्रेस. नाउ व्हाट इज दिस एड्रेस? एड्रेस इज नथिंग बट द लोकेशन at which the next node can be found, where the next element is stored. So linked list कैसे form? Linked list is formed when many such nodes are linked to form a chain. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that there are four nodes and they are interconnected with each other, जो कि एक chain के format में आप लोगों को दिख सकता है. The first node, so here you can see that there is a mention here of head. The first node is always used as a reference to traverse the list and it is known as head, and the last node is pointed to the null, and null को हम ground symbol से भी denote कर सकते हैं. जो ये symbol I have put, this is a ground symbol that shows that it is pointing to null. So let's understand the structure of a node in terms of a code. जब हम diagrammatic representation की बात करते हैं, you can easily see that there is a data part that holds the element. There is a link part that stores the link to the next node, that is it has the address of the next node, and that is how we can form a chain. We have a head and we have a null grounded option. Now जब हम एक कोड की बात करते हैं, सो struct node int data struct node star next. So I assume that you have little knowledge of programming in C. This is a C code where I have shown the representation of a node. So the node has two parts, int data and the struct node. Now int data is the type of data that is being stored in the data part, and struct node star next is the pointer. So next is a pointer of type node. So this is how we can represent the linked list in the form of the code, or you can represent a node in the form of the code. Now moving to the next part of this lecture, we have different phases when we are creating a singly linked list. So once we have created the node, we need to initialize the node. जब हमारा एक नोड बन जाता है, सपोज आई हैव दिस नोड दैट हैज़ अ डेटा पार्ट एंड अ लिंक पार्ट, और इस नोड को हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है. सो इट कैन बी ऑफ 2 बाइट्स, इट कैन बी ऑफ 4 बाइट्स. सो इट डिपेंड्स कि हम कितना उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. सो वंस वी हैव एलोकेटेड द मेमोरी टू दिस नोड, वी नीड टू असाइन द डेटा वैल्यू. अब हमें डेटा के लिए वैल्यू हमें पुटअप करना पड़ेगा. एक बार हमारे पास डेटा आ गया तो हमें अब डिसाइड करना पड़ेगा विच इज़ द नेक्स्ट नोड ऑफ विच द एड्रेस विल बी देयर इन दिस फर्स्ट नोड. सो सपोज मेरे पास सो आई विल बी क्रिएटिंग वेरियस नोड्स हियर. I will be allocating certain memory
and then I will be assigning some values to these nodes, and then I would be connecting these nodes. So these are the 4 major steps when we are creating a single linked list. So again I'll be taking this example itself, जहाँ पे जो पहला नोड है वो हेड है, और जो लास्ट नोड है that the link node represents the links to the null. So let's understand these 4 phases of working on a singly linked list. So first we'll start with the initialize node. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं that I have put up a code for initialize node. Struct node head. So what is this head node? मैंने क्या किया है पहले? So I have put up a head. So head is the first reference pointer जिससे कि हम traverse कर सकते हैं एक linked list में. Then I need to put the value of the pointer. जो pointers हैं हमारे जो next fields हैं उसे हमें we need to initialize that to null. What does this mean is that I am creating one node. So let's say this is node A, and then I will be having it the value is initialized as null, and then I have a node B initialized as B, and so on. So the first step is that we are creating a node we have created the node, and then we are initializing the particular null values to each of the node. देन हमारे पास 4 नोड्स बनने थे, हमने 4 नोड्स बनाए, उन चारों नोड्स को हमने नल वैल्यूज से असाइन किया है. द नेक्स्ट स्टेप विल बी द एलोकेशन ऑफ memory. So what we are doing is we are allocating the memory to each of the nodes, and we have 4 nodes here. So हमने क्या किया है, the first will be malloc size of struct node. So this code refers to the allocation of memory to each node. So depending on the size and the type of data that you are using, we would be assigning the memory, allocating the memory to each node. So we have first node, second, third and फोर्थ. तो हमारे 4 नोड्स थे, उन चारों नोड्स के बनने के बाद हमने उसको इनिशियलाइज किया नल से. एक बार नल से इनिशियलाइज कर दिया तो हमने हर एक नोड को कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी है. एक बार हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई है, सो द नेक्स्ट इज दैट वी आर असाइनिंग द डेटा वैल्यूज. हमने नाउ वी हैव डन द फर्स्ट स्टेप, we have done the second step, now we are at the third step where we need to assign the data values. So you can see here that I have put up an arrow. So यहाँ पे first arrow data means that the data part of the first node is having the value 4. So we have assigned the value 4 to the first data, the first node. Similarly for the second node, so यहाँ पे you can see the second node. अब इसमें हम 7 को कैसे allocate करेंगे? So second the data part of the second node has the value of 7. If I talk about the third, the data part of the third has the value 9, and so on. So this code refers to the assigning of the data, the values to the data. After completing with the first, second and the third step, we will be now connecting the nodes. तो हमारे पास 4 हमने nodes बना लिए हैं, उसको कुछ memory हमने allocate कर दिए. So first हमने उसे initialize किया, हमने कुछ memory allocate करी, और हमने कुछ data values assign कर दिए. यहाँ पर इस particular example के लिए we have taken 4, 7, 9 and 6, and the next the thing would be to connect the nodes. So यहाँ पे आप देख सकते हैं that जो first node है उसका जो next part है that is connecting to the second node. Second node का next part is connecting to the third node. The next of the third node is connecting to the fourth node, and the next part of the last node, that is the fourth node, is connecting to the null. तो इसी चीज़ को अगर हम कोड के फॉर्मेट में लिखें, so that is the next of first node is pointing to the second, the next of second is pointing to third, the next of third is pointing to fourth, and the next of fourth is pointing to null. Why? Because this is the last node in the list. So हमने जो ये पूरा आर्किटेक्चर है वो अभी तक पूरा हमने ये
कंप्लीट कर लिया है. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग टू डू इज़ वी हैव टू सेव द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन हेड. जो हमारा all the subsequent nodes are having the address in the next part. So जो पहला node है that would be that would be given to a variable head. So head is the reference pointer जिससे कि हम ट्रिवर्स कर सकते हैं पूरी लिस्ट को. सो दैट इज़ हाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू अ वेरिएबल हेड. सो दिस इज द कंप्लीट stages in creating a singly linked list. That is all from today's episode. In the next episode, I would be covering the insertion operation on singly linked list.